Hello children, how are you all? I hope you all are good and doing well at home. So children, today this is our online EVS class, and as you all know that we are doing chapter number 11, travel time, and today we will do revision number 2. Yesterday I hope you all have completed your revision number 1, in which I gave you 4 parts to complete. The first one was fill in the blanks. First one was missing letters, second one was fill in the blanks, and the third one was choose the correct answer, and last one was to give two examples of the following transports. I hope you all have completed that work in your revision copies. And children, please, if you have not completed your work, complete it on time, okay, so that you will all be able to learn your chapters on time, because next month it is possible that we will be taking your midterm examinations, okay. So make sure that you are all doing your learning work properly. Now in this chapter number 11, travel time, today I am going to give you revision number 2, and in this revision number 2 I will give you 3 questions, 3 parts, okay. First one is true and false, second is match the following, and third will be your question answers, okay. So you have to complete this work in your revision copies, and I hope you all have made a new revision copy, and all the revision work of all the subjects, okay, whatever the subjects are, like English language, English literature, EVS, maths, you all have to do in one revision copy, okay. आपको एक कॉमन इंग्लिश की कॉपी बनानी है 4 लाइन्स की, जिसमें आप सारे रिविजन्स करेंगे जैसे आप पहले क्लास में करते थे, ओके. सो यू हैव टू मेक अ न्यू रिविजन कॉपी. नाउ कमिंग बैक टू आवर रिविजन वर्क, first of all I will again explain you that how you will write. In this video I will explain you the whole revision number 2, and I have written the answers also. I will explain you with answers के साथ मैं explain करूँगी, but with this video you will get the assignment, and in that assignment answers will not be written, only questions will be written and answers will not be there. So you have to answer on your own. So for answering on your own you have to listen to this video very carefully, okay. So let's get started children. First of all, as you all know, you will take out a new page in your revision copy and you will write down the date, today's date, that is 12/9/2020. First line you will give the heading lesson number 11, travel time. In the next line you will give the subheading revision 2. Now from the third line you will start writing your work, that is question 1, true or false, okay. First true or false is trains are the fastest means of land transport. ट्रेन्स को लैंड ट्रांसपोर्ट का सबसे तेज ट्रांसपोर्ट कहा गया है. इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, इट इज ट्रू. लैंड ट्रांसपोर्ट में ट्रेन सबसे तेज चलने वाली गाड़ी है, ओके. नाउ कमिंग टू द सेकेंड, in deserts elephants are used for transport. Is it true or false? Yes, it is false. In deserts elephants are used for transport. Elephants को यूज़ हम कहाँ करते हैं? dense forest में, thick forest में, जो घने जंगल होते हैं वहाँ पे क्या उठाने के लिए? बड़े बड़े logs उठाने के लिए. और डेजर्ट में किसका यूज़ होता है ट्रांसपोर्ट की जगह? कैमल्स का. That is why camel is called the ship of the desert. So in deserts elephants are not used as transport. So in this sentence it is given, in deserts elephants are used for transport. Your answer will be false, okay. Now the third true or false is camel is called the ship of the desert. Camel को ship of the desert कहा गया है. This is true, okay. Now I hope you all have understood the 3 true or false. Very short revision. This is a very short revision. Only 3 true or false are there. I hope you all have understood. Now coming to the second part, that is match the following. Now children, in match the following, I have already told you before also that I want you all to draw the lines. For matching the lines you have to draw the lines with the help of a scale. Nobody will draw the lines
with their hands. Okay, कोई भी सिर्फ हाथ से नहीं बनाना है, स्केल के साथ में बनाना, सीधी लाइन. Okay, now first side, land transport, water transport, air transport, camel and fuel. Is that clear? Now on the second side, ships, aeroplanes, scooter, petrol, ship of the desert. Now you have to match side A with side B. Okay, so land transport will be matched with scooter because scooter is a land transport, ज़मीन पे चलने वाला. Water transport will be matched with ships because ships को हम water में चलाते हैं, ships water में चलती है. Okay, air transport will be matched with aeroplanes because aeroplane is an example of air transport. Camel, ship of the desert. You all know that camel is called the ship of the desert. Fuel will be matched with petrol because petrol is an example of fuel. Okay, I hope you all have understood. Again I am telling you the match the following. Land transport will be matched with scooter, water transport will be matched with ship, air transport will be matched with aeroplanes, camel will be matched with ship of the desert, and fuel will be matched with petrol. Is that clear, children? I hope these two questions are all clear to you all, and I hope you all have understood this and how you will do. Okay, now coming to the next part is last part, that is question answers. Now फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू वी नीड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. हमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की क्यों ज़रूरत होती है? सो द आंसर इज वी नीड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू ट्रैवल एंड टू कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हमें व्हीकल्स या हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत इसलिए होती है जिससे कि हम उसमें ट्रैवल कर सकें और अपना सामान, दैट इज़ गुड्स, अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सके, कैरी कर सके. इज दैट क्लियर? सो वाई डू वी नीड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? वी नीड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू travel and to carry goods from one place to another. Is that clear? Now second question, what are the main means of water transport? Water transport के main means कौन से हैं? Ships, streamers and boats are the main means of water transport. Ships, स्ट्रीमर्स और बोट्स आपके मेन मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट है. वाटर ट्रांसपोर्ट मीन्स जो पानी में चलते हैं. ओके, सो योर आंसर इज शिप्स, स्ट्रीमर्स एंड बोट्स आर द मेन मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर फ्यूल्स? फ्यूल्स क्या होते हैं? सो द आंसर इज पेट्रोल, डीजल एंड CNG आर कॉल्ड फ्यूल्स. नाउ चिल्ड्रन, यू ऑल रिमेंबर आई एक्सप्लेन्ड यू with one example that as we all human beings need food to get energy to work and play. Okay, अगर हमें खेलने के लिए और काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हमारी बॉडी में एनर्जी कहाँ से आती है? When we eat food. जब हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी से हम अपना काम करते हैं और खेलते हैं. बट सेम केस जो है आपके व्हीकल्स के साथ है. आपके व्हीकल्स को भी एनर्जी कहाँ से मिलती है? फ्यूल से. ह्यूमन बींग्स को एनर्जी फूड से मिलती है और गाड़ियों को एनर्जी, ट्रांसपोर्ट को एनर्जी फ्यूल से मिलती है. ओके, अगर आप अपनी गाड़ी में फ्यूल नहीं डलवाओगे, पेट्रोल, डीजल या CNG जिस चीज़ की भी गाड़ी है वो नहीं डलवाओगे तो आपकी गाड़ी नहीं चलेगी. इट विल नॉट गेट दैट एनर्जी, ओके, टू रन ऑन द रोड्स और ऑन द anywhere. Okay, so petrol, diesel and CNG are called fuels. You will all remember that now. What are fuels? Petrol, diesel and CNG are called fuels. Now coming to the last question, that is from where do we get fuels? अब हमें fuels कहाँ से मिलते हैं? So the answer is we get fuels from the earth. हमें ज़मीन से, earth से fuel मिलते हैं. Okay, और तभी बोला जाता है कि फ्यूल्स जो है हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए जिससे कि हम आगे फ्यूचर के लिए उसको सेव कर सकें. अभी से सेव करेंगे तो हमें आगे फ्यूचर में फ्यूल्स मिलेंगे, वरना वो भी ख़त्म हो जाएंगे. बिकॉज इनसाइड द अर्थ देयर इज़ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ फ्यूल्स लेफ्ट. ओके, बहुत कम अमाउंट में फ्यूल अर्थ में रह गया है, इसलिए हमें बहुत सावधानी से और बहुत
हमें उसको यूज़ करना है जिससे हम उसको ज़्यादा वेस्ट नहीं करें. इज़ दैट क्लियर चिल्ड्रन? सो अगेन आई एम रिपीटिंग द 4 question answers. First question, why do we need means of transport? Answer is, we need means of transport to travel and to carry goods from one place to another. Second question, what are the main means of water transport? Answer is, ships, steamers and boats are the main means of water transport. Question number 3 is, what are fuels? So the answer is, petrol, diesel and CNG are called fuels. Last question, question number 4 is, from where do we get fuels? Answer is, we get fuels from the earth. Now children, I hope you all have understood all the 4 question answers. Okay, and I also hope that you have learnt it also, and you will be able to answer on your own in your revision copies. Make sure that you will make a new revision copy and you will do all the revision work in your revision copy. Okay, now with this video I will be giving you an assignment, and in that assignment revision number 2 will be given, but answers will not be written. उसमें answers नहीं लिखे होंगे, आपको सिर्फ questions दिए जाएंगे जो कि आपको अपने revision copy में लिखनी है. Okay, फिर आप answers अपने आप लिखेंगे. So till my next video children, I hope you will all complete your work and get it corrected by me. Okay, your correction timing, as I always say, that your correction timings will be from 10 a.m. to 1 p.m. and you can come to school from Monday to Saturday and get your copies corrected. Okay, so till my next video children, bye bye, take care, stay at home, stay safe.